काफ़ी टेस्टी है। हेलो फूडीज, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय अनदर मकबैंग वीडियो। और आज मेरे पास खाने में है होममेड वेज पिज़्ज़ा, जो कि मैंने काफ़ी सारे वेजेस के साथ बनाया है और चीज़ भी इसमें बहुत सारा खूब सारा ऐड किया है। साथ में मेरे पास है होममेड पास्ता। ये जो पास्ता है काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ज़्यादा क्रीम डाल के मैंने बनाया है। और साथ में मेरे पास पीने में कोक, और आप देख सकते हैं ग्रिल सैंडविच है जिसमें बहुत सारे वेजेस ऐड किए हैं मैंने। ये काफ़ी सारा ग्रिल सैंडविच है मेरे पास और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी आइटम है आज मेरे पास। तो इसी के साथ बिना देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसी के साथ बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट। क्योंकि काफ़ी देर से मेरे मुंह में पानी आ रहा है तो मैं वेट नहीं कर सकती अब। बिना चटनी के तो मुश्किल है, बिना केचप के मेरा कुछ भी खाना, क्योंकि मुझे बिना केचप के कुछ भी नहीं पसंद इसमें। सो केचप तो बहुत मैंडेटरी है आज के लिए। ये और ये लो। साथ में डालेंगे कुछ चिली फ्लेक्स। ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पास्ता के साथ वाइट सॉस। पास्ता ठंडा हो जाएगा तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कॉल फॉर यू। पास्ता बहुत टेस्टी बना है, क्रीम क्रीम वाला। आप लोग देख सकते हैं क्रीम भरा हुआ है मैंने इसमें फुल। फर्स्ट बाइट में मज़ा आ गया। इसमें मशरूम भी ऐड है तो
काफ़ी टेस्टी है। काफ़ी स्पाइसी बन गया।
पिज़्ज़ा थोड़ा सा नीचे से, पिज़्ज़ा का बेस जो है वो थोड़ा सा लाइट जल चुका है, तो उसका टेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा। इस वजह से ये मैं बाद में खा लूँगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।